बहुत दूर आसमान लोक नाम की एक रोशनियों वाली जगह थी। वहां रहती थी एक खूबसूरत पर्पल परी जिसका नाम था जियाना। उसके पास एक खास ताकत थी। वो दर्द को प्यार में बदल सकती थी। जियाना हर रात चांद के साथ बात करती थी, सितारों के साथ मुस्कुराती थी, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह थी। उसने कभी प्यार महसूस नहीं किया था। एक दिन आसमान से एक सुनहरी शूटिंग स्टार गिरा और उसके साथ गिरा एक सितारों का राजकुमार, आर्यन। उसका जहाज टूट गया था और वो जियाना के लोक में गिर गया। पहले तो दोनों अलग थे। आर्यन सिर्फ लॉजिक में विश्वास करता था और जियाना दिल से काम लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जियाना ने उसे दिल से देखना सिखाया और आर्यन ने उसे अपने अस्तित्व का सच बताया। वो एक सितारे का राजकुमार था, लेकिन अपने ग्रह से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक परी से प्यार कर लिया था। जियाना का दिल धड़क उठा। लेकिन आसमान के नियमों के मुताबिक परी और राजकुमार कभी साथ नहीं रह सकते। उनका प्यार हर रात चांदनी में छुप के मिलता था। एक रात जियाना ने चांद से गुहार की, अगर प्यार जादू से ज्यादा शक्तिशाली है तो मुझे उसके साथ एक नई दुनिया बख्श दो। चांद मुस्कुराया। एक जबरदस्त रोशनी छाई और दोनों के लिए एक नई दुनिया, प्रेम लोक बन गया, जहां परियां और राजकुमार साथ रह सकते थे बिना किसी रुकावट के। आज भी जब तुम चमकीला पर्पल सितारा देखते हो, समझ लेना। हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. परियों के देश में एक खूबसूरत और नेक दिल लाल परी रहती थी। उसके लाल चमकदार पंख सबसे अलग थे और उसका दिल सोना था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, फूलों को खिलाती, जानवरों का इलाज करती और छोटी परियों को उड़ना सिखाती। एक दिन बादल राजकुमार, जो आसमान के महल में रहता था, परियों के देश में आया। उसने लाल परी को देखा और उसकी मेहनत और प्यार भरी सोच से वो बहुत प्रभावित हुआ। लाल परी को भी राजकुमार पसंद आया, लेकिन उसने कहा, मैं किसी राजकुमार से तभी शादी करूंगी जब वो सच में दिल से नेक होगा। राजकुमार ने साबित किया कि वो सिर्फ राजा का बेटा नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। उसने जंगल के बीमार जानवरों की देखभाल की और छोटी परियों के लिए एक नया स्कूल बनवाया। तब लाल परी मान गई। फिर आई शादी का दिन। सारी परियां चमकदार कपड़ों में आई। आसमान में सितारों का झूला सजाया गया। गुलाबों की बारिश हुई और तारे नाचने लगे। छोटी छोटी तितलियां लाल परी के लहंगा ठीक कर रही थी। लाल परी और बादल राजकुमार ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मैजिकल फूलों के बीच शादी रचाई। आसमान में उनके प्यार का एक खूबसूरत रंग बना और सारे देश ने खुश होकर जश्न मनाया। Once upon a time, in a faraway kingdom, there lived a kind-hearted princess named Noor. She was loved by everyone for her helpful nature and beautiful smile. She always put others before herself. One day, while exploring the old palace storeroom, she found a strange magical mirror. On the mirror was written, "Whoever wishes to see their true self, look into me." Princess Noor laughed and said, "This is just an ordinary mirror." But as she looked into it, she saw her reflection, slightly different. Her face glowed with kindness, but her eyes looked tired. Suddenly the mirror spoke, because it was magical. "You shine on the outside, but inside you're tired. You live for others, but you've forgotten to live for yourself." Noor was surprised. She thought, "I always run around making others happy, but what about my own happiness?" From that day on, Princess Noor made a decision. She would take care of her own happiness too. She would spend time on things she loved, like painting and reading, and she would live for herself so she could help others even better. The magic mirror reminded her every day that true beauty comes from within, and the heart only shines when it is truly happy. In the end, Princess Noor became a wise and radiant queen, remembered by all with love and respect. Moral of the story: taking care of yourself is important. Only a truly happy person can spread real happiness to others. If you like my story, subscribe my YouTube channel Story for Kids and press the bell icon. Thanks.
Once upon a time, there was a beautiful fairy named Leela. She lived in a forest filled with the fragrance of flowers and the songs of birds. Leela had a magical wand that she used to help her friends, and they loved her dearly, always eager to hear her stories. One day, a prince spotted Leela and fell deeply in love with her. He expressed his desire to marry her, but Leela set a condition. He would have to face a challenge first. The prince agreed, and Leela sent him on a magical journey. The prince encountered many difficulties but ultimately succeeded. Leela was impressed by the prince's bravery and determination and decided to marry him. They got married happily, and their story became immortal. Once upon a time, in a beautiful kingdom called Noor Palace, there lived a kind-hearted and smart princess named Dara. She loved flowers, birds, and books, but most of all, she loved the magical garden near her palace. This garden was very special. The flowers could talk, butterflies sang songs, and the trees sparkled with magic. But one day, a wicked witch cast a spell on the garden. All the flowers wilted, the birds stopped singing, and the garden became silent and sad. Princess Era was heartbroken. She went to her grandmother and asked, "Grandma, how can I bring the garden back to life?" Her grandmother replied, "Only true love and bravery can break a spell." Era didn't give up. She spent every day in the garden, watering the dry plants, singing songs, and talking to the flowers. Slowly, the garden began to bloom again. The magic returned, and the spell was broken. The Queen of Flowers said to Era, "Your heart is full of kindness. That's why the magic returned. You are not just a princess, you are now the guardian of the magical garden." Moral of the story: true love, kindness, and courage can break any curse and bring back happiness. If you like my story, subscribe my YouTube channel Story for Kids and press the bell icon.